Good morning, students. Today we are going to discuss about vector addition. Vector addition is an important topic that we have to cover. What is vector addition? The adding of two or more vectors to get the required result is called vector addition. It is not a straightforward addition like 2 plus 2 is 4. In case of vector, 2 plus 2 can be 1. In case of vectors, 2 plus 2 can be 3. That's why I am calling the result, not the sum. The vector we get after vector addition is called resultant vector. Outcome of vector addition is called resultant vector. Methods of vector addition. Vector addition can be done in two methods. Number one, graphical method. Number two, analytical method. Laws of vector addition. Vectors can be added using three important laws. First law is called triangle law. Triangle law is a tip to tail law. Tip to tail law means when we use this law, the tip of one vector is placed on the tail of other vector and so on. That's why it is called tip to tail method. And this method is applicable only on two vectors. सिर्फ दो वेक्टर पर अप्लाई होगा and the resultant will be obtained in the reverse order. Resultant will be obtained in reverse order. Parallelogram law. This law is a common tail method, means all the vectors that are going to be added will have the same tail, and this can also be applied on the two vectors only. But in this case, the resultant will be in the same order. Third is polygon law. Polygon law can be performed only in the graphical form. It cannot be applied using analytical form. Means this law does not exist in analytical form. It is only graphical treatment. Basically, it is the expansion of triangle law. It can be applied on multiple vectors, and resultant here also will be obtained in the reverse order. Let us come to the triangle law. Triangle law says if two vectors are represented as the two sides of a triangle taken in same order, then the third side of that triangle will be the resultant of these two vectors when taken in reverse order. And once again repeating, if two vectors are taken in same order to represent the two sides of a triangle, then the third side of that triangle will completely represent the resultant vector if taken in reverse order. Let us understand what is the law and how it can be applied. Let us assume two vectors, vector A and vector B, as shown in figure. How to add? There are two methods of adding. Either I can add vector A plus vector B, that I am calling vector R, that is the resultant. If vector A and vector B are being added, then what comes? In this case, we shall first draw the first vector in the same direction with the same length. I know vector A is in this direction. So this is vector A. Vector A I have plotted. Now it is being added using triangle law, and I know triangle law is a tip to tail method. So the second vector means vector B will be starting from the tip of vector A, and it will be drawn in the direction it is given in the same order with the same length. This is vector B. Now these two sides or these two vectors make an open triangle. Means this is these two vectors are representing two sides of a triangle, and both the sides are in same order. Here onward I am going. Here I am going like this. If it would be like this, then it will be reverse order. But the two sides are in same order. Now we have to make the third side, we have to complete the triangle.
and triangle can be completed by joining these two. Tip of first vector, tail of first vector and tip of second vector will be joined to make the complete triangle. Now, what will be the direction of the resultant? If I take arrow like this, then it will be a cyclic order or same order of the vectors. This vector, and this vector, all the three will be in the cyclic order. So it is the same order. But as I know that the resultant should be taken in reverse order, so the reverse order will be this. So this is vector R, O, A, B. So here OA represent vector A, AB represent vector B, and OB represent vector R. So this is the triangle method. Now, what we need to do? In graphical method, we have to calibrate the sides. If we are given two vectors, suppose one is 25 Newton force and other is 30 Newton force, then I have to scale the sides. This if I am taking 1 centimeter equal to 5 Newton, then for 25 Newton it will be 5 centimeter, it will be 6 centimeter. Also the direction should be perfectly taken. Using the scale and the protractor, you have to scale the side. This angle I am calling alpha will be the direction of resultant with respect to the first vector, or from here I can plot one more angle to find the direction with B. So this is the vector addition. If I say vector B plus vector A, what happened to vector B plus vector A? Using triangle law I am taking, and that I am calling R dash. तो वेक्टर बी इज प्लॉटेड फर्स्ट. सबसे पहले हम वेक्टर बी को प्लॉट करते हैं. जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है एग्जैक्टली उतनी ही बड़ी लाइन उसी डायरेक्शन में हम खींचेंगे. दिस इज वेक्टर बी. नाउ triangle method is a tip to tail method, means the second vector will start from the tip of first vector. So the tail of vector A lies on the tip of vector B. यहां से मैंने वेक्टर A की डायरेक्शन में उतनी बड़ी लाइन खींची जितनी बड़ी लाइन मुझे दी हुई है. This is vector A. Now these two vectors are taken in same order to represent the open triangle. To close the triangle, I have to join the two ends. The tail of vector B is joined to the tip of vector A. In the reverse order, it is going to be the R dash. This angle I am taking beta, and beta is the angle of resultant with respect to the direction of vector B. वेक्टर बी के साथ इसने इतना एंगल बनाया, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन के साथ इसका एंगल इतना था. इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एंगल, तो दिस इज गोइंग टू बी द अल्फा. Alpha is the angle between resultant and the direction of vector A. So this way we can add two vectors using graphical method. If I have scaled the line, in line को मैंने proper नाप के बनाया है, proper angle इसके साथ बनाया, तो resultant is going to come the very exact. यहां पर ध्यान देंगे, एंगल चेंज होते ही रिजल्टेंट बदल जाएगा. अगर ये एंगल सपोज 60 डिग्री का है, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो रिजल्टेंट ये होगा. अगर ये एंगल 50 डिग्री हो जाए या 70 डिग्री हो जाए, तो इस रिजल्टेंट की लेंथ या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल किस तरफ बन रहा है. तो दिस वे एंगल चेंज, वेक्टर्स बदले ना बदले, लेकिन अगर उनके बीच का एंगल भी बदल जाता है तो रिजल्टेंट बदल जाता है. सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ. लेट अस डिस्कस द एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ. एनालिटिकल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ. एनालिटिकल फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन यूजिंग द फॉर्मूला. Question comes, state and prove triangle law of vector addition using analytical method. If two vectors are taken as the two sides of a triangle,
in same order, then the third side of that triangle will be their resultant taken in reverse order. So let us draw the diagram first. Let us assume a vector A. This I am calling vector A and is represented by OA. So line OA represents vector A. I have assumed another vector B represented by AB, and this is I am calling vector B. The angle between vector A and vector B, the direction of vector A and direction of vector B, I suppose is theta. From the triangle law, if I complete the triangle, this hypotenuse is coming as the resultant R. For magnitude of R from figure, let us find certain things. Vector OA represents vector A, and if I say mode of vector OA becomes equal to mode of vector A, दोनों के ऊपर mode लगाया, but I know mode of vector A is called OA and magnitude of A is called A only. Similarly, vector AB is equal to vector B, or I can say AB length becomes equal to B, यानी mode of vector B. वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर R. अगर मैं फिगर से देखूं तो OB जो है वेक्टर R के इक्वल है, और आई कैन से लेंथ OB बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R. सो फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यानी R के मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूं? टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू सम कंस्ट्रक्शन फ्रॉम आवर साइड. लेट अस ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन टू दिस साइड OA, और इस पॉइंट को मैंने कहा चलिए M कह लिया. दिस पॉइंट इज M. तो फ्रॉम ट्राइंगल OBM, अगर मैं ट्राइंगल OBM को देखूं तो एक राइट ट्राइंगल है, और किसी भी राइट ट्राइंगल में हमें पता है कि साइड OB का स्क्वायर इक्वल टू MB का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर. तो इससे मैं कह सकता हूं OB स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. और अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे पता है OB इज नथिंग. OB तो मेरे पास R है, बट OM मेरे पास यहां नहीं है, BM भी यहां नहीं है. तो आई कैन से R स्क्वायर कैन बी रिटन एज OM कैन बी रिटन एज OA प्लस AM. OA प्लस AM कैन बी रिटन एज OM प्लस BM एज इट इज. स्क्वायर मैंने कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा. अब हमें देखना है कि ये AM और BM कैसे मिले. अगर मैं ट्राइंगल ABM की बात करूं, फ्रॉम ट्राइंगल ABM, तो इस ट्राइंगल में मैं कह सकता हूं साइन ऑफ थीटा विल बी परपेंडिकुलर, यानी BM अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB, और आई कैन से BM इक्वल्स टू AB sin theta, but I know AB is nothing but vector B itself. So I can say BM equals to B sin theta. Also, in the same triangle, cos of theta becomes equal to base यानी AM upon hypotenuse यानी AB, and I can say AM equal to AB cos theta, or I can say AM equal to equation number 3rd. If I put the value of AM and BM from second and third then in equation 1, then क्या होगा? From 1 to 3, R square equal to
I know AOA is equal to A and AM becomes B cos theta. तो I can say A plus B cos theta का होल स्क्वायर प्लस BM हमने देखा था, हमारे पास था B sin थीटा, यानी B sin थीटा का स्क्वायर expanding R square becomes equal to A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta, ये इसका होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, प्लस B square sin square थीटा। अगर मैं इन दोनों टर्म को देखूं और एक साथ रखूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक तरफ आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को अगर मैं साथ रखता हूं और बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो बन जाता है 1। तो यहां से मेरे पास आया ये रिजल्ट, और यहां से मैग्नीट्यूड यानी आर बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ and for direction, if I assume that alpha be the angle made by the resultant with vector A, then for direction क्या होगा? For direction हम कह सकते हैं if alpha be angle between वेक्टर R एंड वेक्टर A, अगर वेक्टर R वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बनाता है देन tan ऑफ अल्फा क्या होगा? tan ऑफ अल्फा बिकम्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BM अपॉन OM, और हमें पता है BM हमने अभी निकाला था, दैट इज व्हाट, BM को मैं एज इट इज कह सकता हूं OA प्लस AM, क्योंकि OM को मैं OA प्लस AM में कन्वर्ट कर सकता हूं, एंड ये ऑनवर्ड BM वाज हमारे पास था B sin थीटा और OM था A प्लस B cos थीटा, यानी हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos theta. This is the direction of resultant. This is the direction of resultant. So this is all about the analytical form of triangle law. This is all about the triangle law of vector addition. Thank you, and thank you for watching. Have a good day.